Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jana Ballabha Jaya Giri Badadhari Jaya Giri Badadhari Jaya Gopi Jana Ballabha Jaya Giri Badadhari Jaya Giri Badadhari Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana Jamuna Tira Banakari Jamuna Tira Banakari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Ballabha Jivaradhari Gopi Jana Ballabha Girivaradhari Jashodanandana Vrajajana Ranjana Jashodanandana Vrajajana
Yasodamandana Bhagajanandana Yamunatira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Jai Rama,
प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज इस प्रातःकालीन कक्षा में। और आज हमारा परम सौभाग्य, आज हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य इस्क्रेस अग्निदेव प्रभु। हरि बोल। I think this is the first time Prabhuji are giving class in Iskcon Punjabi Bagh. Yeah, It's our great fortune. And आप में से अधिकतर लोग शायद परिचित होंगे। मुझे याद, I remember when I came first in Krishna consciousness, and the CD which was given to me, it said Kirtan by His Grace Agnidev Prabhu. I was wondering then who is Agnidev Prabhu, but later on I had the fortune to have association with Prabhuji. और we request you to please kindly bestow these blessings again and again. Please keep visiting this humble temple to provide your association. तो इस ग्रेस अग्निदेव प्रभु से हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बार बार हम यहाँ पर आके अपना संग हमें प्रदान करें। हिज ग्रेस अग्निदेव प्रभु पूरे विश्व में जाने चाहते हैं अपने सुंदर कीर्तन के लिए। उनको लगभग 40 साल से ज़्यादा इस कृष्ण भावनामृत में हो गए हैं, इसका अभ्यास करते हुए, इसका प्रचार करते हुए। प्रभु जी वेस्ट इंडीज से हैं और न्यूयॉर्क में श्रीला प्रभुपाद से मिले, वहाँ पे उन्होंने उनसे दीक्षा प्राप्त की। तो हम प्रभु जी के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे। आज की कथा श्रीला प्रभुपाद जी के विषय पे है और आपसे अनुरोध है, आपके पास जो मोबाइल फोन्स हैं उसको आप प्लीज साइलेंट कर लीजिए या स्विच ऑफ कर दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। So, the reason everyone didn't know who I was or what I looked like, because we didn't have cell phones. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो मैंने अभी शेयर किया कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कीर्तन सुना था इस ग्रेस अग्निदेव प्रभु का, तो मुझे नहीं पता था कौन है। अभी मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ हम सबका कि हमें प्रभु जी के बारे में मिला, उनका संग मिल रहा है। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि जो उस समय कारण है कि पता नहीं था कि कौन है अग्निदेव प्रभु, या बहुत सारे भक्तों के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि उस समय सेल फोन्स नहीं थे। In the 70s, all we had was cassette. 1970। Some of you don't know what is cassette, probably. 1970 में उस समय कैसेट्स हुआ करती थी। शायद आप में से कई भक्तों को ये भी ना पता हो कि कैसेट क्या होती है। Anyway, the devotees were kind. फिर भी जो भक्त हैं बहुत दयालु थे। And they, from the very beginning, I was a bhakta. And when I began to chant, the authorities, they liked it and they thought this boy should, we should record him. तो मैं भक्त था, नया भक्त था, और उस समय मैंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना शुरू किया। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि इनके कीर्तन को रिकॉर्ड करना चाहिए। Since we are going to talk a little bit about Prabhupada, I wanted to share my first wonderful experience with Srila Prabhupada. तो क्योंकि हम यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद के विषय में चर्चा कर रहे हैं, मैं चाहता था कि जो मेरी पहली भेंट हुई श्रीला प्रभुपाद से बहुत ही अद्भुत थी, उसके बारे में मैं वर्णन करूं। This experience is not found in the books, in the Lilamrita. तो जो ये अनुभव है ये पुस्तकों में नहीं मिलेगा, लीलामृत में। But I was a young devotee. मैं एक युवक भक्त था। And this is in the New York temple. और न्यूयॉर्क मंदिर की बात है। I joined in New York temple. मैंने न्यूयॉर्क मंदिर में ज्वाइन किया था। And it was 1974. 1974 में। So we were told that Srila Prabhupada is coming. हमें बताया गया था कि श्रीला प्रभुपाद आ रहे हैं। And he would come every year for maybe 3 or 4 days. वो प्रति वर्ष आते थे 3 या 4 दिन के लिए। So naturally everyone was
looking forward to His divine grace appearance. और प्राकृतिक रूप से हर कोई बहुत उत्साहित था श्रीला प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए. So, after they announced that Srila Prabhupada would come, my temple president, at that time, his name was Gopijana Vallabha. तो जब ये अनाउंस किया गया कि श्रीला प्रभुपाद आ रहे हैं, तो मेरे मंदिर के अध्यक्ष, उनका नाम है गोपीजन वल्लभ प्रभु. So I'm telling this story because it was very instructive for me. He told me that, everyone is going to the airport to greet Srila Prabhupada. मैं यहाँ पर इसका वर्णन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही निर्देशात्मक किस्सा था. उन्होंने मुझे कहा कि हर कोई एयरपोर्ट जा रहा है श्रीला प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए. Now in those days, this is long before 9/11, there were no securities. In fact, we would go all the way into the temple, into the airport, just when Prabhupada comes through the door. And we would greet him. It would be a mini festival, because the devotees would bring a big basket of flower petals, and we'd have a full kirtan party. As soon as we saw him, and kirtan let me finish it. And then we would spread his path with flower petals throughout the airport. And we would leave for the airport authorities to clean it up. तो ये 11 सितंबर के जो अटैक्स हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उससे पहले की बात है. 1970 में जो एयरपोर्ट हुआ करते थे, वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी. तो जब श्रीला प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए जाते थे, तो ऐसा होता था कि एयरपोर्ट पे एक छोटा सा उत्सव या एक मेला ऐसा लग रहा है. तो सभी भक्त बहुत उत्साहित होते थे श्रीला प्रभुपाद के स्वागत के लिए. फूलों की पंखुड़ियाँ, फूल बिछाए जाते थे, प्रभुपाद पे फूल बिखेरे भी जाते थे, उन पे फेंके जाते थे. और जब चले जाते थे तो फूल वैसे वहीं पर पड़े रहते थे एयरपोर्ट अथॉरिटीज के लिए कि वो उसको साफ करें. Sometimes the airport workers didn't appreciate us. They saw it as littering the airport. बहुत बार वहाँ पर एयरपोर्ट के जितने कर्मचारी थे, विशेषकर सफाई करने वाले, वो हमारी इतनी प्रशंसा नहीं करते थे, क्योंकि हमारा आना उनके लिए लगता था कि अब ये बिखेर के जाएंगे हर चीज. One time, one of the workers in the airport, he came forward and complained. Prabhupada was sitting down to give like a press conference, and this worker came forward to complain about the mess we were making with all the flowers. तो एक बार एक कर्मचारी सामने आया, श्रीला प्रभुपाद वहाँ पर बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और उन्होंने शिकायत लगाई कि भक्त जिस प्रकार का वहाँ पे कूड़ा करकट बचा रहे थे. So Prabhupada was so transcendental. He listened to the man complaining, and then he looked at him and said, "You don't like flowers?" तो श्रीला प्रभुपाद दिव्य थे, उन्होंने उनकी पूरी बात सुनी और उसके बाद उनसे पूछा, ओ आपको जो फूल अच्छे नहीं लगते? And he completely disarmed the man. और उन्होंने उस व्यक्ति को बिल्कुल निहत्था कर दिया. The man didn't know how to respond. He just backed away and went about his business. उस व्यक्ति को बिल्कुल समझ नहीं आया कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो फिर वापस चला गया. Anyway, this particular time I was going to talk about, the president approached me and said, everyone is going to the temple, to the airport, but we want you to stay back.
तो जो मेरे मंदिर अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि हर कोई एयरपोर्ट जा रहा है श्रील प्रभुपाद का स्वागत करने के लिए, पर मैं चाहता हूं कि आप मंदिर में पीछे यहीं पर रुके। So I was horrified that he didn't want me to go to the festival, to the greeting at the airport. I couldn't imagine not going, because I had been to one before and it was so much fun. We had Prabhupada's coming, everybody wants to go to the airport to greet him. It's been a year, you want to see him. He's the life and soul of all the devotees. And now my president is telling me, you have to stay back. So I put up a little argument. I said, why? He said, someone has to stay back and guard the temple. I said, why? He said, well, some of our neighbors in the neighborhood, they were not so favorable. They would sometimes throw things in the temple, at the temple, and they would sometimes harass the devotees. So, if we're all gone and they know that nobody's there, they may come and desecrate the temple. So they need somebody to stay back. So it made sense, but I didn't want to be the one. तो ये बात मेरे लिए अकल्पनीय थी कि मंदिर अध्यक्ष मुझे कह रहे हैं कि आप मंदिर में पीछे रुको। मैं पहले भी प्रभुपाद जी को स्वागत करने के लिए गया था और ये बहुत ही उसमें आनंद का विषय है। एक साल बाद श्रील प्रभुपाद आ रहे हैं और आप उनसे देखना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद उस समय सभी भक्तों के जीवन होते थे। तो मैंने उनसे थोड़ी सी बहस की। मैंने अपने मंदिर अध्यक्ष से पूछा कि क्यों पीछे मैं क्यों रुकूं। उन्होंने उस समय जो हमारे मंदिर के पड़ोसी थे इतने फेवरेबल नहीं थे। कभी कभार वो कुछ चीज़ें मंदिर के अंदर फेंक देते थे, मंदिर के ऊपर फेंक देते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पीछे से मंदिर की रक्षा नहीं करेगा तो हो सकता है पड़ोसी अंदर आए और यहाँ पे कुछ चीज़ों को फैला दें। तो उन्होंने कहा कि मैं ही क्यों रुकूं। So this was a difficult order for me to follow, no doubt, because I wanted to go, but it was my duty to stay because I was given the order by my temple president. We were taught you have to follow the authorities. So my mind was giving me trouble, and I began to think of how I could slip away. And maybe when the last car is leaving and the president is already gone, he wouldn't see me, I could slip in and go. So this was my dilemma. I kept thinking about it. तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बड़ा असमंजस सा विषय था। मेरे लिए बहुत दुख की बात थी, मेरे लिए बहुत कठिन निर्देश था, क्योंकि मैं जाना चाहता था और मेरे जो अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं कि आप पीछे रुको। तो मेरा मन मुझे परेशान कर रहा था और मैं सोच रहा था कि किस प्रकार से मैं यहाँ से खिसकूं। जब मैं सोच रहा था आखिरी जब गाड़ी जाए, जब मंदिर अध्यक्ष जा चुका हो, तो शायद आखिरी गाड़ी में बैठ कर चला जाऊं। Then I began to think, you think things through. I began to think, what if I, go against the orders and I go and I enjoy myself with everybody else, but the demons come and desecrate the temple, and when we get back, I thought all of this out. I thought it out. And when we got back, and they found, and Prabhupada comes, the temple is desecrated, and he turns to the president and he said, why didn't you keep somebody back to guard the temple? And the president will say, I did. And Prabhupada said, who? So in my mind, I thought this scenario, and then I thought, I better not go. I should, उस समय मैंने विचार किया
अगर मैं मान लो चला जाता हूँ एयरपोर्ट और अपना खूब मैं वहाँ पर आनंद लेता हूँ और वापस आता हूँ, देखता हूँ कि पीछे से जो पड़ोसी हैं जो इतने फेवरेबल नहीं थे, उन्होंने बहुत ही हाँ तो उन्होंने मंदिर में सारी कुछ तोड़ फोड़ कर दी हो या यहाँ पे कुछ तहस नहस कर दिया हो, और फिर शिला प्रभुपाद यहाँ पर उनका आगमन हो और वो कहें कि ये सब क्या है, और वो अगर मेरे मंदिर अध्यक्ष से पूछें सबको भेजने की क्या आवश्यकता थी, कोई पीछे से नहीं रोक सकते थे, और मंदिर अध्यक्ष बोले कि मैंने रोका था, और प्रभुपाद पूछे किसको? So I surrendered. And I surrendered and I stayed back. And there were no incidents in the temple. I just chanted japa waiting while everyone went. And I got the best reward. The best reward I could imagine. I couldn't imagine a nicer reward. What happened is when Prabhupada comes through the airport, he would get in his vehicle first. Everyone else was parked in the parking lot of the airport, in these huge airports in New York. But they would bring Prabhupada's car right up to the curb. So as he comes out, when he gets in the car, this guy will be the first one to reach the temple. Tell him. तो मैंने अपने आप को इस निर्देश के प्रति शरणागत किया और मैं एयरपोर्ट नहीं गया, मैं मंदिर ही रुका, मैंने पीछे से कुछ जप किया, और इसके बदले में जो मुझे इसका अवार्ड मिला, जो इसका तोहफा मिला, इनाम मिला, वो मेरे लिए अकल्पनीय था। मैं कभी स्वप्न में नहीं सोच सकता था, इससे बेहतर तोहफे की मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। उस समय क्या होता था, शिला प्रभुपाद की जो गाड़ी है वो एयरपोर्ट तक आती थी, बाकी सब भक्तों की गाड़ी दूर पार्किंग लॉट में खड़ी होती थी, एयरपोर्ट बहुत बड़ा था। तो शिला प्रभुपाद पहले होते थे जो गाड़ी में बैठे, और उनकी गाड़ी सबसे पहले निकलती थी, यानी वो सबसे पहले मंदिर पहुंचेगी। So Prabhupada's car arrived at the temple maybe 7-8 minutes before everybody else. तो शिला प्रभुपाद की गाड़ी बाकी गाड़ियों से 7-8 मिनट पहले ही मंदिर पहुंच गई। And I was in the temple room alone with Radha Govinda. And suddenly the door opens and in walks Srila Prabhupada alone. तो उस समय मैं मंदिर कक्ष में था श्री राधा गोविंद विग्रह के समक्ष, और तभी मैं मंदिर का दरवाजा खुलता है और शिला प्रभुपाद अंदर आते हैं बिल्कुल अकेले। So there was no big kirtan or anything. And I'm wondering, where's everybody else? So Prabhupada came and he took darshan, and no one is with him. The other devotees in the car with him was the temple president, Prabhupada's servant, his secretary, just 3 or 4 devotees with Prabhupada. And when they came back, they just left Prabhupada, let him go into the temple by himself, and they went to the pujari room to get paraphernalia to wash Srila Prabhupada's lotus feet. तो उस समय मैं वहां खड़ा होकर यही सोच रहा था कि बाकी भक्त कहाँ पर हैं। श्रीला प्रभुपाद की गाड़ी में प्रभुपाद जी के सेवक, उनके सेक्रेटरी और मंदिर अध्यक्ष भी आए थे, वो सब कहाँ हैं। तो ऐसा हुआ कि जब प्रभुपाद गए तो उन्होंने प्रभुपाद को मंदिर में अकेले जाने दिया और बाकी भक्त डीटी रूम में चले गए सामान लाने के लिए, जिससे प्रभुपाद के चरणों का अभिषेक किया जा सके। So Prabhupada then went back and sat on his Vyasasana. Still no one else is there. It's just me and him alone. And then the other devotees came out. Someone had a pitcher of water, a basin, a towel, and an arti tray. So they were going to have a nice Guru Puja. But all the, almost 100 devotees are nowhere to be found. They haven't come yet from the airport. And then the president looked at me and said, chant, because they're going to start worshiping Prabhupada. So I got the mridanga
And I began looking at Prabhupada because someone is washing his feet, someone has a towel, someone is fanning, and I think someone is beginning the arti. So I began to sing Sri Guru Charana Padma, and very close, I'm standing right in front of Prabhupada, like from here to the pillar. And as I began to sing Sri Guru Charana Padma, Prabhupada began responding, singing, answering the song. And I was just, I couldn't believe it. I thought, this is amazing. And of course I began to think, if I had run away and abandoned my duty, I would never get this. This is the most wonderful thing that could happen. So I was able to sing the whole song, Sri Guru Charana, the whole Guru Puja, before the other devotees arrived. तो उस समय श्रीला प्रभुपाद व्यासासन की ओर गए, वहाँ पर बैठे और अभी भी कोई भक्त नहीं आया हुआ। तो इतने में जो वो 3 भक्त हैं डीटी रूम से बाहर निकले, सारे आरती पैराफिनेलिया के साथ, टॉवल के साथ, धोने के लिए जल को लेकर, और उन्होंने प्रभुपाद जी के चरण का अभिषेक करना प्रारंभ किया। और मेरा जो मन अध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि आप गाओ, कीर्तन करो। तो मैं विश्वास नहीं कर पाया, तो क्योंकि हर कोई व्यस्त था, तो मैंने मृदंगा लिया और गुरु पूजा गानी प्रारंभ की, श्री गुरु चरण पद्म। और प्रभुपाद जी के मैं बहुत ही करीब था, जैसे यहाँ से पिलर के तक इतना ही डिस्टेंस था। और जब मैंने गाना शुरू किया तो प्रभुपाद ने फिर पीछे से गाना शुरू किया, रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया, मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात थी। और मैं मन में सोच रहा था, अगर मैं एयरपोर्ट जाता तो मुझे ये अवसर कभी भी प्राप्त नहीं होता। तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा तोहफा था। Anyway, just as the arti finished, just as they were finishing the arti, then begin to blow the conch. Then I heard all the car doors slamming, these cars screeching, and everybody comes rushing into the temple room. Just as I'm finishing the last verse of the song, Devejas Gushu Tribhuvan, and they rushed in with instruments and kartals, and then the kirtan just took off. I just cooked it up, and the kirtan, it became a wonderful, then we had kirtan for another half hour, just with Prabhupada sitting on the Vyasasana. And as the devotees were dancing, and he would take flower petals and throw it on them. It was the most wonderful day. Of course, I learned a valuable lesson that how important duty is in Krishna consciousness. Because if I had abandoned my duty and gone, I would never have gotten that opportunity. तो जैसे ही आखिरी लाइन थी गुरु पूजा की, एबेयाश पुष्टि त्रिभुवन, और शंख बज रहा था, तो तभी मुझे कई सारी गाड़ियों की रुकने की आवाज़ आई, उनके दरवाजे खुलने की आवाज़ आई, और तभी पूरे का पूरे भक्तों का समूह मंदिर कक्ष में प्रवेश करता है और बहुत ही भाव विभोर होकर होने वाला कीर्तन शुरू हो जाता है। और वहीं से एक बहुत ही तेज ध्वनि में कीर्तन प्रारंभ होता है, सारे कीर्तन कर रहे हैं, मृदंग बज रहे हैं, और प्रभुपाद जो पुष्प हैं, पुष्प की पंखुड़ियाँ प्रभुपाद जी पर डाली जा रही हैं, और आधे घंटे तक ऐसा बहुत ही उमंग करने वाला कीर्तन वहाँ पर हुआ। और मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ये निर्देश अपने जीवन में मिला कि कितना आवश्यक है अपने कर्तव्य का पालन करना, जो आपको ड्यूटी दी गई है, क्योंकि अगर मैं वो छोड़ देता तो ऐसा दुर्लभ मौका शायद मुझे कभी प्राप्त नहीं होता। As I said, it was a valuable lesson. To learn the importance of doing your duty. It's like in Bhagavad Gita, Krishna, he told Arjuna, your duty is to fight, you're a Kshatriya. You can't run away from this. So
Prabhupada and what was wonderful is that because I surrendered, I saw it that I got rewarded with this opportunity. And there would be many more times when I would get to go to the airport. But this one time, when I was told not to go, I thought I got the best deal. Right? जैसा कि मैंने कहा कि मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान निर्देश था, और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को भी यही उपदेश दे रहे हैं कि आप क्षत्रिय हो तो आप अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्तव्य से भागो मत। मैं पहले भी एयरपोर्ट गया था, परंतु जब मैं एयरपोर्ट नहीं गया, जब मैंने पालन किया अपने जो अथॉरिटीज के निर्देश का, तो मुझे इसका रिवॉर्ड मिला, इसका इनाम बहुत अधिक मात्रा में मिला। I'd like to share one more story. When I got second initiation, Diksha from Prabhupada. मैं एक और कहानी यहाँ पर बताना चाहता हूँ, किस्सा जो मेरे साथ हुआ जब मुझे दूसरी दीक्षा प्राप्त हुई। I was still in New York temple at the time. उस समय मैं न्यूयॉर्क में ही था। And we heard that Srila Prabhupada he was not coming to New York, but he was going to Philadelphia. And Philadelphia is not very far, maybe 2 or 3 hours away from New York. And he was going there to attend the Rath Yatra. And the Rath Yatra was going to be, I think, on a Sunday morning. And the whole temple was going to go, because it's not far. If you know Prabhupada's coming 2 or 3 hours away, everybody would go to the Rath Yatra, just because Prabhupada was going to be there. And again, the temple president came to me and said, I thought he was picking on me. He said, so Prabhupada, everyone going for the Rath Yatra, but you have to stay back. So again I thought, why is he asking me to stay back? But he said, the next day, the following day after Rath Yatra, Prabhupada will be giving initiations. And at that time you'll get second initiation. So I had to miss the Rath Yatra. But the next day would be a wonderful event. Right? तो उस समय हमें पता चला कि श्रीला प्रभुपाद न्यूयॉर्क नहीं आ रहे, वो फिलाडेल्फिया जा रहे हैं, जो न्यूयॉर्क से 2-3 घंटे की दूरी पर ही था। और अगर भक्तों को पता चले, रथ यात्रा थी रविवार सुबह, भक्तों को पता चले कि 2-3 घंटे की दूरी पे श्रीला प्रभुपाद आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा मंदिर ही वहाँ पर जाता था वहाँ उस समय भाग लेने के लिए। तो फिर ऐसे हुआ कि मेरे जो अध्यक्ष हैं वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि पूरा मंदिर उस रथ यात्रा में जा रहा है, परंतु आप नहीं जा सकते, आप पीछे मंदिर में रुकिए। तो मैंने फिर प्रश्न किया, मैं ही क्यों? तो उन्होंने कहा कि अभी रथ यात्रा है, उसके अगले दिन प्रभुपाद दूसरी दीक्षा देंगे, तो तब आप जा सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे रथ यात्रा मिस करनी पड़ेगी, परंतु जो उसका अगला दिन है वो बहुत ही एक अद्भुत दिन होगा, विशेष दिन होगा। So, the morning after Rath Yatra, very early, like right after Mangal Arati, some of the devotees who went to the Rath Yatra, the arrangement was that as soon as they came back, the first car that came back, we would then, it was myself and another devotee who was also asked to stay back, we would jump in the car and race off to Philadelphia. And we wanted to get there in time for Prabhupada's Bhagavatam lecture. So we did that. We made it just in time. Okay?
तो प्रबंध ये था कि अगले दिन सुबह सुबह रथ यात्रा से जो पहले भक्त गाड़ी में वापस न्यूयॉर्क आएंगे, तो प्रभु जी और एक और अन्य भक्त जिनको रुकने के लिए कहा था कि वह तुरंत गाड़ी में बैठेंगे और फिलाडेल्फिया जाएंगे। और हम जल्द से जल्द पहुंचना चाहते थे श्रीला प्रभुपाद की कक्षा से पहले, और हम पहुंच गए। Now, something wonderful happened at the beginning of the Bhagavatam class with Srila Prabhupada. As you all know, when Prabhupada was traveling, he was also translating. And so, whatever book he was whatever part of the Bhagavatam he was translating, he would speak on that. He would speak on that in whatever temple he arrived at. So, when he came there, he was translating the 6th canto of Srimad Bhagavatam about Ajamil. So, of course, we didn't have the book. He was still working on it. But he had an assistant who would travel with him to assist in the translating work. There were 2 devotees. One devotee was Pradyumna. Prabhupada used to call him affectionately Panditji. And there was another devotee named Nitai. So at this time, Nitai was traveling with Prabhupada. They took turns. They were both grihastas, so they both had wives at home, but they would go out for months traveling with Prabhupada. What an opportunity. So this time, Nitai was traveling with Prabhupada, and he had the transcripts. As Prabhupada spoke into his dictaphone, then his job was to type it up, listen to it and transcribe it. So that was the scenario. तो जब उस सुबह हम पहुंचे तो एक और बहुत अद्भुत घटना हुई। तो जब श्रीला प्रभुपाद, हम जानते हैं कि जब वो यात्रा करते थे साथ साथ अनुवाद भी करते थे, और प्रभुपाद जिस भी मंदिर में जाते, जिस श्रीमद् भागवतम के कैंटो पर वो अनुवाद कर रहे होते, उसी पर वो कक्षा देते थे। तो उस समय 6th कैंटो का वो अनुवाद कर रहे थे। अजामिल का प्रसंग था, और प्रभुपाद जी के साथ उनके 2 सहायक होते थे, एक प्रद्युम्न प्रभु जिनको प्रभुपाद प्रेम से पंडित जी कहते थे, और निताई प्रभु। तो वो टर्न लेकर प्रभुपाद जी के साथ जाते थे। तो उस समय निताई प्रभु प्रभुपाद जी के साथ थे, और उनका कर्तव्य था कि जो भी प्रभुपाद अनुवाद करते डिक्टाफोन में, उसको सुन के वो टाइप करते थे, अनुवाद टाइप करते थे। तो उनके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जब प्रभुपाद कक्षा दे रहे थे। So the practice was we would have the verse. Prabhupada had them write the verse on a chalkboard so that we could all the devotees could practice chanting. This way we learn how to pronounce the Sanskrit. And so the shloka was on the board, and no one had a book. So Prabhupada was going to, he had already transcribed, he had already translated that shloka and given a purport, but it was in the manuscript, in the transcript. So after we chanted the verse, then Prabhupada told him, that devotee, read the translation. तो जब श्रीला प्रभुपाद उस जिस श्लोक पर वो कक्षा लेते थे उसको वहाँ चौक बोर्ड पर लिख देते थे, जिससे कि सभी के सभी भक्त श्लोक के उच्चारण करने का अभ्यास कर सकें, किस प्रकार से उसका सही तरीके से उच्चारण करना है। और उस श्लोक का प्रभुपाद अनुवाद लिख चुके थे, उसका ट्रांसक्रिप्शन अवेलेबल था, और उन्होंने वहाँ पर भक्त को कहा उसको पढ़ने के लिए। You must forgive me, I'm not good at this, having a transcript the first time. So, Nitai, the devotee, he read the transcript, the translation.
And it was that section where Ajamil first sees the Yamadutas coming. They're approaching, the Yamadutas are coming to take him away. And so he's terrified. So the devotee read the translation from the manuscript, and he said, when Ajamil saw the horrible looking, the Yamadutas, he was terrified, and he called out for his son. Right? And this devotee said, Ajamil called out for his son, Narayan, 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 3 times. Now, we don't know, this is the first time we are hearing it. And we didn't think anything wrong. But something was wrong. And Prabhupada caught it. He said, Prabhupada took the microphone and he said, did I say 3 times? And everyone's wondering what's going on. And Prabhupada said it again. Did I say 3 times? And the devotee is sitting right there and he doesn't respond. Twice Prabhupada said it. Did I say 3 times? And this devotee just has his head bowed. And then Prabhupada said, I did not say 3 times. Did I say 3 times? He asked again. And this time the devotee said, no, Srila Prabhupada, very softly. And Prabhupada said, he leaned back and he said, why 3 times? Once is sufficient. And when Prabhupada said once is sufficient, the whole temple erupted in ecstasy. Haribol! It was logical and perfect. I said, why 3 times? Once is sufficient. Somehow that devotee thought, somehow Maya, he thought he could improve on, and he thought by emphasizing, saying Narayan, Narayan, Narayan. But it was lucky that Prabhupada was right there and he caught it. And then very gently, very mercifully, Prabhupada corrected him and says, don't change anything that I am. So it was a moment, a teachable moment for all the devotees, that what, as Prabhupada would say other times, that Krishna is dictating these books. So no one has any authority to change anything. तो श्रीला प्रभुपाद ने अपने भक्त को पढ़ने के लिए कहा ट्रांसक्रिप्ट में से, और 6ठा स्कंद चल रहा था। प्रसंग था कि जब अजामिल को यमदूत दिखाई देते हैं और अजामिल उस समय बहुत ही डरा हुआ है, भयावह परिस्थिति में है, और जब उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने लिखा कि उन यमदूतों को देखकर अजामिल ने उच्चारण किया नारायण नारायण नारायण। तो हम सब भक्त थे, तो हम पहली बार ये प्रसंग सुन रहे थे और हमें बिल्कुल ठीक लगा, परंतु कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद ने उस चीज को पकड़ लिया था। तो जब उस भक्त ने इस प्रकार से बोला, श्रीला प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या मैंने 3 बार कहा है नारायण? उस भक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभुपाद ने 2 बार और पूछा, क्या मैंने 3 बार कहा है? तो उन्होंने, जो भक्त थे, उन्होंने अपना सिर झुका लिया। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि मैंने 3 बार नहीं कहा, मैंने सिर्फ 1 ही बार कहा है। तो उन्होंने कहा, श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि 3 बार क्यों? 1 बार नाम लेना ही पर्याप्त है। और जैसे ही प्रभुपाद ने ये कहा, पूरा का पूरा जो मंदिर कक्ष था वो हरि बोल करके उच्चारण करने लगा। और फिर श्रीला प्रभुपाद ने बहुत ही कृपा पूर्वक, प्रेम पूर्वक उन भक्त को कहा कि किसी भी चीज को आप बदलो मत। जैसे कि प्रभुपाद कई बार कहते थे
कि कृष्ण मुझे अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं। तो वो जो एक क्षण था हम सबके लिए बहुत ही निर्देशात्मक, हमें शिक्षाप्रद वो क्षण था। Anyway, Prabhupada went on to give a most wonderful talk on the glories of the holy name. You know, in fact, the whole, if you read that part of the Bhagavatam, there's so much instructions on the holy name. But that particular day was very memorable because Prabhupada took that one incident and elaborated on it. How just by chanting once, purely, without offense, can counteract more sins than you will be able to commit. He said, even if you are a first class papi, a first class, how Prabhupada would speak, a first class papi, a first class sinful person, means you're expert at committing sins. So even such a person, he will not be able to commit enough sins. But once chanting the holy name can purify. और फिर श्रीला प्रभुपाद ने हरिनाम की महिमा पर बहुत ही अद्भुत कक्षा दी, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद अजामिल के प्रसंग में आता है। और प्रभुपाद जी ने बोला कि फर्स्ट क्लास पापी, आप प्रथम श्रेणी के जो पापी व्यक्ति है, वो एक बार भगवान के दिव्य नाम का शुद्ध रूप से अगर उच्चारण कर ले तो वो नाम उसके इतने पाप नष्ट कर सकता है जितना वो पाप करने की उसकी क्षमता भी ना हो। We don't have much time, do we? The time's run out. We could chant some more. I mean, now more and more pastimes of Prabhupada are coming out as many of his older disciples write. You know, I did not have so much association because Prabhupada was always moving. And, unless you were moving with him, you know. And then some places he would stay longer than others. But by 1974, 75, the movement was really expanding rapidly like an epidemic. And so when you read that in the early days people got a lot of more association. Prabhupada would stay, a month at one temple. But as the movement expanded, he could only stay 3-4 days. And when he came, because there was so many devotees, only a few devotees would get the opportunity to maybe go on a morning walk with him or to go into his room. It was practical. So I got to go once only on a morning walk in Los Angeles. And once I got to go in a darshan in the room, Prabhupada speak. The rest of the time was just to be in the temple, sitting at Prabhupada's feet and hearing him speak Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita. And that was everything. For most devotees, that was everything. श्रीला प्रभुपाद जी के बहुत से शिष्य अब प्रभुपाद जी के जीवन के ऊपर लिख रहे हैं, अपने व्यक्तिगत एक्सचेंजेस के ऊपर लिख रहे हैं, परंतु मेरा जो प्रभुपाद जी के साथ इतना व्यक्तिगत रूप से संग नहीं था, क्योंकि 1974 में ज्वाइन किया था। उस समय आंदोलन बहुत बड़ा हुआ था और प्रभुपाद एक जगह से दूसरी जगह निरंतर ट्रैवल करते थे। तो जब तक अगर आप प्रभुपाद के साथ ट्रैवल नहीं कर रहे तो इतना संग आपको प्राप्त करना संभव नहीं था। पहले के समय जब आंदोलन शुरुआत हुआ था तो प्रभुपाद एक जगह महीने भर रहते थे, तो उस समय जो भक्त जुड़े थे उन्हें बहुत अधिक मात्रा में संग प्राप्त हुआ।
परंतु जैसे ही आंदोलन इतने विशाल मात्रा में बढ़ा तो प्रभुपाद एक जगह सिर्फ 3 या 4 दिन ही रुकते थे। उसमें भी जो प्रभुपाद जी का संग मिलता था या तो मॉर्निंग वॉक पे जाने से या प्रभुपाद जी के रूम में जब दर्शन का समय होता था तब जाने से। अन्यथा अधिकतर भक्तों के लिए जो प्रातःकालीन कक्षा होती थी श्रीमद् भागवतम या चैतन्य चरितमृत पर, तो वही उनके लिए सब कुछ होता था। तो प्रभु जी बता रहे हैं एक बार मैं प्रभुपाद जी के लॉस एंजलिस में उनके रूम में दर्शन के समय भी उपस्थित था। तभी हम कीर्तन करेंगे। So we have a little kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Srila Prabhupada ki jai. Jai Nitilila Prabhupada Vishnupad Paramahamsa Paribrajacacharya Sotara Sata Sriman. His Divine Grace, Avoy Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Iskcon Founder Acharya Srila Prabhupada ki. Nityalila